हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे व्हाट इज द फाइट बिटवीन FIIs एंड DIIs। अच्छा, बिफोर आई गो ऑन टू दैट, a lot of you have been asking to write subtitles in English. So uska what I have to really do in that case, I have to completely speak in Hindi and then English subtitles will be displayed. That's what I've heard from my team. So next video onwards, I will be completely making a video in Hindi and then its translation transcript you can see on my videos. All right, so I finally got a solution to the challenge that we were facing a long time. अब बात करेंगे कि अब से कुछ साल पहले होता क्या था। अगर FIIs ने पैसा विड्रॉ किया तो मार्केट एकदम से गिरता था, फ्री फॉल में आ जाता था मार्केट। बट अभी क्या हुआ है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विच आर द म्यूचुअल फंड्स, द बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे जो है बहुत स्ट्रांग हो गए बिकॉज आम आदमी बहुत अवेयर है अबाउट द स्टोरी कॉल्ड इंडिया। And because everybody is so aware, they are investing, and most of the people don't have time to do analysis, etc. So they go through the mutual funds. So mutual funds are basically domestic institutional investor. Their asset under management have really become huge. So now what is happening at this point of time, that it's not solely the FIS, DIs have come very close to FIS. So मैं आपके साथ ये डेटा शेयर करूंगी और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि how India is becoming powerful, right? Indian investor is becoming powerful. I don't know आपको एक वो याद है कि नहीं है कि there was this gaming stock of US. Oh, in that particular stock, what happened? Institutional investors have heavily sold, but retail investors got together और $1 का stock $20 पे लेके गए थे. That's where they actually twisted their arms. Retail investors ने बोला था enough is enough by these institutional investors. Now we will show our strength, and some around I don't know how many 4 million investors came together quietly and उस स्टॉक को ऊपर लेके गए थे. अब मैं आज आपके साथ डेटा शेयर करती हूँ और that shows the strength of domestic investor. So domestic institutional investors have increased their stake in the Indian companies while FIIs have reduced their stake. The difference between a DII and FII ownership is the lowest ever as of December 2023. Here are the some key figures. सबसे पहले अगर हम बात करें कि ownership in the NSE companies, DIIs की कितनी है? Roughly about 16%. FIIs की कुछ 18.18% है. उसके बाद चेंज इन द ओनरशिप, मतलब कितनी और कंपनीज में इन्वेस्ट किया है DIIs ने, करीब 2.19% अपना स्टेक इंक्रीज किया है इंडियन कंपनीज में. FIIs ने 1.5% के करीब रिड्यूस किया है अपना स्टेक. उसके बाद चेंज इन द ओनरशिप सिंस दिसंबर 2013. 2013 के बाद से क्या हुआ है? Domestic institutional investors have actually increased its stake by 5.47%. Almost it's a horizon of 10 to 11 years. और अगर हम बात करें कि FIs ने क्या किया, इन्होंने अपना तब से लेके अब तक 1% अपना ओनरशिप रिड्यूस किया है. पीक ओनरशिप कितनी थी अगर हम बात करें, जो थी दिसंबर 2023 में, DIs की पीक ओनरशिप थी रफली अबाउट 16% एंड FIs की पीक ओनरशिप थी 2020 में रफली अबाउट 21%. अगर हम बात करें कि ईयर 2023 में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, DIs ने कितना इन्वेस्ट किया और कितना FIs ने किया, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे और आपको ताकत पता लगेगी. 1.85 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है फ्रॉम DIs and 1.76 lakh crore investment हुआ है from FIs, right? So DIs have become stronger in investing at this point of time in Indian stock market. अगर हम बात करें 2022 में, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? 2022 में डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था 2.77 लाख करोड़, जहां की FIs ने विड्रॉ किया था 1.26 लाख करोड़ को विड्रॉ किया था. उसके बाद अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड्स की ओनरशिप कैसी रही, तो दिसंबर 2023 में इट वाज हाईएस्ट एट 8.81%. इट वाज ऑल टाइम हाई.
उसके बाद सिप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 17,610 करोड़, which is the record high, has been invested by Indian people. Experts say DIIs are likely to surpass FI in the near future. So as more household savings are invested in mutual funds, insurance and other instruments. अब हम बात करेंगे कि DIIs वर्सेस FIs, who owns more of the companies. अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात एंड करें और FIs की बात करें, are the two types of investors in the stock market. DIIs include mutual funds, pension funds, insurance funds, and banks. FIs include foreign funds, hedge funds, sovereign wealth funds, foreign banks. अगर ownership की बात, वो मैंने आपसे already कर ली है कि DIIs have about 16% ownership and FIs about 18%. DIIs have been increasing their share of ownership while FIs have been decreasing. So past 10 years में क्या हुआ है? DIIs have owned 10.49% in December 2013, while FIs owned about 19.36%. DIIs have been outperforming FIs in terms of net inflow since 2021. DIIs have invested 1.85 lakh crore, while FIs have only invested 1.76 lakh crore. DIIs bought 2.77 lakh crore in 2022, while FIs sold 1.26 crore. So basically, what simply I want to tell you here, that this shows the normal people, the lay people, ordinary people's trust in the government at this point of time. If they are investing in the Indian companies, it simply indirectly means they are investing in the story called India. तो आप भी अच्छे स्टॉक्स को ध्यान में रखिए. कोई भी आपको स्टॉक अंडर वैल्यूड मिलता है और गुड क्वालिटी स्टॉक हो, जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी, KPIT टेक या KEI या टाटा एलिक्साई या फिर आपको TCS लोअर वैल्यू, अब तो इसने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया. कोई भी बढ़िया स्टॉक अगर आपको किसी न्यूज के कारण गिरता हुआ दिखाई देता है, प्लीज बी रेडी विद योर कैश and invest. So this is the story. You can see the data will never lie, right? So data here is telling that the DIIs are just inching up, so keep it on radar. All the best companies, and जो आपको धीरे धीरे आप सिप कर सकते हैं, आप खुद भी सिप कर सकते हैं. और अगर आप खुद सिप करेंगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा. अच्छी कंपनीज में एवरी डिप, जैसे मैंने आपको बहुत बार नाम दिया हुआ, TCS दिया हुआ, टाटा एलिक्साई दिया हुआ, KPIT टेक दिया, KEI दिया हुआ है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप एवरी डिप इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी. सो ध्यान में रखिएगा, इन्वेस्ट करते रहिए, और नेवर फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and remain tuned with us from 10 to 11 every day for live trading. Bye bye, take care.